समझ नहीं आ रहा अपने सैलरी इंक्रीमेंट का क्या करूं। बेटा इतना क्या सोच रहा है? अपने म्यूचुअल फंड्स के एसआईपी का टॉपअप करा ले। दिस इज द राइट टाइम। क्या? समझ में नहीं आया। बेटा इतना क्या सोच रहा है? अपने म्यूचुअल फंड्स का एसआईपी टॉपअप करा ले। दिस इज द राइट टाइम। आप समझा। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully. While all exit polls or all other exit polls presented one picture of Bihar, there was one exit poll, the widely followed Access My India poll, that while giving an edge and a victory to the NDA, also projected a much clearer, closer contest in Bihar than other polls have indicated. Counting is now just a few hours away, and the actual results will be with us very soon. But Pradeep Gupta of Access My India, which also has the largest number of people surveyed in its exit polls, has numbers that throw up some very, very interesting questions and also throw up some very, very interesting possibilities. In a moment from now, we'll be talking to the Access My India head political analyst and psephologist, Pradeep Gupta. I'm Barkha Dutt. You're with the Mojo Story. Our focus continues to be on wondering who will be the next chief minister of Bihar. And which Gadbandhan, which alliance will come out tops? Will it be the NDA or will it be the Mahagathbandhan? If you looked at other exit polls a couple of days ago, you would think the election was tilting completely one way. But the Access My India exit poll numbers suggest that the opposition, the Mahagathbandhan, has put up a good fight and that the battle is much closer and much harder fought than other polls have suggested. While the Access My India numbers also projects an NDA victory and the return of Nitish Kumar, in a sense, in the saddle, maybe even outperforming the BJP compared to last time, there is also the question of who will be the single largest party and what permutations and combinations that could throw up. Like I said, the Access My India poll is different from all of the other polls. And to talk about those dramatic numbers and those tantalizing possibilities, let me introduce our newsmaker today. Pradeep Gupta of Access My India is with us. Namaskar and good to see you, Pradeep ji. I think कहना पड़ेगा कि आपका पोल कुछ हटके है, अलग है. Can you explain how you have reached, before we get to the specifics, such a different conclusion and such a different set of numbers from everybody else? Thank you, Barkhaji, for having me here. And our poll may look like different when you compare the others, but the reality is that our team goes to each and every constituency of Bihar. We do face-to-face interview, and roughly around 200 odd samples we collected from each of the constituency, and whatever we find on the ground we have reported as usual and as always. I mean, that may looks different, but directionally if you see, it is in the similar line. But yes, the contest is much closer in our poll among the major two Gadbandhans, NDA and Mahagathbandhan. 43% for the NDA and 41% for Mahagathbandhan. This is the vote share, and seat share is also 121 to 141 for NDA, and for Mahagathbandhan it is 98 to 118. If you see, in that sense, the higher range, it is quite a distance, you can say, in that sense, quite this thing. But if you see the higher range of Gadbandhan and lower range of NDA, you may see it is only 3 seats difference there. Having said that, and the majority mark is 122 seats. This is just the 1 seat away. In that sense, the possibility of getting to the lower range is around 5 to 10%, as against forming the government, maybe the simple majority or maybe
little more than simple majority. We call it 60-40 type. So in that sense, it is NDA is clear-cut winner. And now coming to what is the making this NDA or the Nitish Kumar coming back to power in our exit poll at least. So any election for that matter, you try and evaluate the election outcome or the likely election outcome basis the performance of incumbent government. This is something the paramount. I mean, one has to see to it. And we often see with the lens of, anti-incumbency or otherwise, which is pro-incumbency. In this case, Bihar is throwing some interesting figures here. Though there is a pro-incumbency in favor of not only Nitish government, but combined with Nitish and Modi, state and central government in that sense, considering the delivery and in particular women beneficiaries when we talk about. Now coming to the youth section, we generally classify between 18 year of age to 29 year of age. There we see the good difference, the good lead among the with the Mahagathbandhan. Mahagathbandhan is scoring about 44% as against NDA 37%. After that, in all the age group segment, NDA is scoring good lead, sizable lead, I can say that. But this, mind you, one more thing, this 18 to 39 group contributes 50% of the electors of the Bihar, and the rest 40 onwards plus age group contributes another 50%. So in that sense, this become little interesting election because, and the 50% is again the women contribution to the total number of electors. So this is something making very interesting poll particularly, and when your voter turnout has increased by 10 percentage point from 57 to approximately 67%, where this is coming from. This is a question in everybody's mind, which is a historical voter turnout in case of Bihar Assembly election. I'll try and decode that as well. So there are about 48 lakhs has been deleted, though 66 odd lakhs has been deleted, but on the account of 20 lakhs deleted, those who are deceased, about 28 lakhs permanently shifted. These 48 lakhs, when you convert into number of votes, considering this time number of electorates in Bihar, 7 crore 42 lakhs, it turned out to be 6% odd points. So this, on account of SIR purification process, this incremental of 6% is there. They were never there to cast the vote. So that is the precisely reason why it used to be around 56-57%, be it assembly election or be it the Lok Sabha election. But this 4%, another incremental, where this is coming from. So in last 3 assembly election generally held between Dussehra and Diwali. Before Diwali, it used to get concluded much before the Diwali, 2, 3, 4 days, much before the Diwali, the result. This time what had happened, election is happening post Diwali, meaning the Chhath Puja. And when you say Chhath Puja from a Bihar perspective, it's a too big a celebration, in fact, the largest celebration. And from all across the country, people goes to their native place in Bihar, and they've been there. And this time, these political parties send some, and they made sure they've been taken care of till the polling date. The hospitality they have provided to some extent, they have provided the to and fro fare also, and making sure that they are there till the voting day. So this is something very interesting. And when we say most of the migrated and the most who are outside the Bihar, the natives of Bihar living outside, in general, the combination of age group is 18 to 50 is much more than any other group, and in particular 18 to 20 years to 40 years for a different purpose and obvious reasons, we know that. So this is something, this election throwing these numbers in our poll, and let's see how this turns into the result.
Now, I want to ask you, you've explained it in a very fascinating way, but जहां मोटी मोटी बात है कि सरकार किसकी बनेगी, right? You say that directionally it is of course going towards the NDA, but the RJD, the Mahagathbandhan, has put up a good fight. Now, if I were to ask you, can there still be some surprises where, if you talk about a margin of error percentage, and and especially when you break down the party wise projection by Axis by India, it's very interesting because you're still projecting the RJD like last time to be the single largest party. Point one. The second very interesting point that is emerging from your numbers, Pradeep ji, is the JDU. Nitish Kumar had been written off. लोग कह रहे थे उनके ब्रांड से थकावट हो गई है. Prashant Kishore said he's not mentally fit to be in public life. By your figures, in a relative way, Nitish Kumar will improve his performance as a party, and the BJP will slightly come down. Can you explain these 3 points that have emerged in your survey? Yes, Barkha. So let's talk one by one. The RJD. See, whoever is contesting more number of seats likely to get more number of seats in comparison to the other party, other group. So RJD is contesting 143 seats as against BJP and JDU contesting 101 seats each. So there is a sizable difference of 42 seats in the contesting election. Accordingly, they are likely to secure the RJD in our poll 67 to 76 seats. So, I mean, that is as simple as that. Now, coming to the JDU and BJP, though they are contesting the same number of seats and both of them are likely to get 18% vote each in our poll. But as far as the seat goes, here you are seeing 50 to 56 for the BJP and 56 to 62 for the JDU, meaning if you see the net upper lower range, it may be 56 seats here and there and 2, 3, 4 seats here and there. But how and why the JDU performance has improved substantially comparing to the last election, one has to see to it. Last time LJP contested separately from the Gathbandhan, the NDA, and they had contested only against where the JDU was contesting. They have not contested against where the BJP was contesting among those seats, which turns out to be denting 33 seats to be precise of JDU. And now this time they are contesting election with the NDA. You can see suddenly the incremental thing. Last time JDU secured 43 seats, contesting 115 seats, and those 33 seats last time, if you add to their kitty, it would have been 76 seats, meaning 2 seats more than the BJP, because BJP has contested 110 seats last time. So this is the simplistic arithmetic, but it all depends. When you see and compare the number of seats being contested by each of these parties. That is correct. पर जो बीच में या शुरू में चर्चा चली थी प्रदीप जी कि एनडीए की सरकार आएगी लेकिन नीतीश मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, अगर आपके आंकड़े सही रहे, if the result is along the lines of what your exit poll has found, then there is no NDA without Nitish Kumar. Definitely not, because नीतीश कुमार, हमने जब लोगों से पूछा कि नीतीश कुमार की तो अब स्वास्थ्य और वगैरह वगैरह के चलते 20 साल से हैं ये वो, तो उनका एक आंसर होता था, और मुझे जो लगा कि बड़ा कन्विंसिंग आंसर होता था कि पलटू राम भी बोला गया, स्वास्थ्य की प्रॉब्लम भी बोला गया, बहुत फटीग फैक्टर आ गया, 20 साल एक ही चेहरा, एक ही सेंटेंस में वो बड़ा अच्छे से समराइज कर देते। नीतीश कुमार जो भी हैं, जैसे भी हैं, हमारे लिए तो बहुत अच्छे हैं, मीनिंग द गवर्नेंस एंड द डिलीवरी matters the most. So this is something is turning out to be, as far as the health and other issues goes, see, people see what they are getting, what they have promised, and what is being delivered to them. Beyond these things, very limited section of society is talk or impact about this, but by and large majority of the people look forward for the delivery, and in particular where the socio-economic structure of Bihar comparing to the other state is much lower. I mean,
government of the day matter a lot, where there is hardly any industry in the state. So government, become very important point. I want to come back to the Mahila Yuva debate. आपकी बहुत ग्रैन्युलर आपके पोल्स देख के बहुत मजा आता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है, because your data is very granular, and you looked at gender wise projections, you have looked at age wise projections. The gender wise breakup is on our screen, age wise भी हम दिखाएंगे. आपसे पूछना चाहती हूँ, is it fair to say in your exit poll you have found more women are leaning towards NDA, but young people, जो एक बात छिड़ी थी कि young people will go towards the new alternative, which is Jan Swaraj. We'll discuss Prashant Kishore separately. But your survey finds that most young people are actually going towards the Mahagathbandhan. तो जो पहले कहा जाता था कि जंगल राज की मेमोरी बहुत अभी भी it's very alive. Among young people, they don't seem to have remembered that past. They seem to be gravitating towards the Mahagathbandhan. So explain this gender and age response and how it is the Mahila. Is it going to be the Mahila or the Yuva vote that will decide this election? So as I mentioned, when you say Yuva, so if you calculate Yuva up to 29 years of age, then they contribute 24%. But Mahila is 50%. So, that the basis, sharp difference in the basis. So that is where the NDA is scoring more, and which turning out to be the victory for the NDA, the more number of votes for the NDA. It's as simple as that. Now, coming to the Prashant Kishore point you mentioned and asked. See, in our poll also, Prashant Kishore just 1 month before the election, when the election was announced, Prashant Kishore party was scoring about 8% point. And after this, the people these days vote in a winning cause. And उनको ये पता है कि हम जिसको भी वोट करेंगे, यदि उसकी सरकार ही नहीं बनने के चांस हैं, तो वो जो भी promises कर रहे हैं, वो तो बस promises ही होने वाले हैं. And these days people vote प्योर, मैं बोल रहा हूँ ना कि ट्रांजेक्शन होता है. मैं हमेशा सबको कहता हूँ कि यार एक पॉलिटिकल पार्टी या लीडर और इलेक्टर या वोटर के बीच में एक एग्रीमेंट होता है कि भाई आपने मुझे वोट किया तो मैं आपको ये दूंगा. You call it transaction, you call it governance, you call it whatever you want to call it. एंड प्रशांत किशोर की जहां तक बात है कि उन्होंने, मैं कहता हूं कि कोशिश काबिले तारीफ है, बट मंजिल अभी दूर है. किसी भी चीज को, खासकर इतने बड़े विषयों को और इतने बड़े स्टेट को आपको वो करने के लिए, मैं लाइफ में कहता हूं कि जब आप ग्रेजुएशन भी आपको करना है तो स्टैंडर्ड 1 से शुरू करते हैं. 12 years plus 3 years ऑफ कॉलेज, 15 years लगता है. तो थोड़ा समय लगता है. इतना बड़ा तो जब उन्होंने अपने बारे में कहा या अर्श पे या फर्श पे, तो आप कहेंगे कि आपके पोल में वो फर्श पे है? अब वो एनालॉजी तो मैं नहीं कह रहा, बट मेरे पोल में उनको 0 से 2 सीट जीतते हुए दिखाई दे रही है. एक सीट तो अच्छा खासा कर रहे हैं, वो जोकीहाट सीट के ऊपर है. सरफराज आलम जो है वो जोकीहाट सीट के ऊपर, जेएसपी जो है वो अच्छा कर रही है. शायद वो सीट जीतने की अच्छी उम्मीद है. ये भी चर्चा चली है बिहार में प्रशांत किशोर को बीजेपी का बी टीम कहा गया कई बारी, आरजेडी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से. बट योर सर्वे फाइंड्स that he actually cut into the NDA voter base more than the MGB voter base. तो ये तो एक बहुत इंटरेस्टिंग फाइंडिंग है आपकी. बिल्कुल. आप यदि जातिगत उसमें जाएं तो आपको बिल्कुल मिल जाएगा कि जहां पे भूमियार, ब्राह्मण और राजपूत, वहां पे सबसे ज्यादा प्रशांत किशोर की पार्टी स्कोर कर रही है इन कंपेरिजिंग टू अदर्स. बड़ा इंटरेस्टिंग फिगर है. यदि आप वो दिखा पाए आपकी स्क्रीन पे जातिगत समीकरण, तो बहुत अच्छा होगा. जी, maybe we can pick up the access slide itself and show that. ये है सर, स्क्रीन पे है सर. जी बिल्कुल यही है. तो अब आप उसमें देखिए कि प्रशांत किशोर के जो 7 पॉइंट आ रहे हैं, वो आ रहे हैं जनरल क्लास के ऊपर तरफ से. ओबीसी से 5 आ रहे हैं. वहां पे बीजेपी का फिगर देखिए 63-65 स्कोर कर रहे हैं. वेयर मुस्लिम एंड यादव में जाएंगे तो जेएसपी को केवल 1 और 2% मिल रहे हैं. यानी मैं बात करूं, मैंने खुद ने भी खूब इंटरव्यू किए 3-4 दिनों के दौरान पे. रोज के मैं करीब 30 इंटरव्यू कर रहा था. तो
मुझे एक भी यादव नहीं मिला जो कहे कि वो जेएसपी को वोट करेगा। ये जो मुसलमान के भी वोट देख रहे हैं, वो जोकीहाट सीट के ऊपर मुस्लिम खुद ही चुनाव लड़ रहे हैं, इसके चलते वो वहां पर आ रहे हैं। तो पूरा का पूरा जो बड़ा चंक का जो है वो प्रशांत किशोर को जो भी मिल रहा है वो अपर कास्ट का मिल रहा है। अपर कास्ट वी ऑल नो दैट is the aligned well with the NDA or the BJP. So that is the story of this thing. And मैंने कहा जो 75% जो 4% मिल रहे हैं वो एनडीए के तरफ से आ रहे हैं, और बाकी 12 और 13 जो अदर्स की तरफ से और महागठबंधन की तरफ से। बार बार ऑपोजिशन कहती है कि ये तो बिल्कुल बीजेपी की बी टीम है, आपके आंकड़े बिल्कुल ऑपोजिट दिखा रहे हैं कि कास्ट वाइज देखा जाए। सो यू से यू डिड नॉट मीट इवन वन यादव वोटर हु सेड ही वाज गोइंग टू वोट फॉर। मैंने नहीं मिला, वो कुछ तो मिलते हैं, उनकी बात हो गई। दूसरी एक और चीज मैं यहाँ पे पॉइंट कहना चाहता हूँ, पोलिंग डे के दिन यदि प्रशांत किशोर 4 से 6 की तरफ जाते हैं, जो 2% हमारा मार्जिन रहता है, ये फर्दर डेंट करेगा बीजेपी एनडीए को। और यदि ये 2 जाते हैं, और यदि ये 2 जाते हैं, 4 से उठ के 2 पे ही सिमट जाते हैं, तो फिर ये समझ लीजिए कि एनडीए की 160 के ऊपर सीटें आना तय है। तो आप कह रहे हैं कि अगर प्रशांत किशोर की अभी जो प्रोजेक्टेड 4% वोट शेयर है, अगर वो 6% तक क्लाइम हो जाती है, विच इज रफली वो चिराग पासवान इफ यू रिमेंबर गॉट लास्ट टाइम, रफली अंदाजन। उसका भी गणित बता दें। नहीं, पक्का गणित पता। अच्छा, आपने पॉइंट, चलिए आप एक पॉइंट कंप्लीट नहीं, मेरा पहले ये बताइए, अगर प्रशांत किशोर का 6% तक जाता है और आप कह रहे हैं कि लोअर रेंज में आएगी एनडीए, हमारी लोअर रेंज की तरफ ज्यादा आएगी। सो इफ प्रशांत किशोर वोट परसेंटेज गोज अप, एनडीए's numbers will fall, मीनिंग 130 मिड पॉइंट आप 130 ले लीजिए, तो 130 के नीचे जाएंगे मिड पॉइंट से। और यदि प्रशांत किशोर 6 जाता है तो जो हमारी ऊपर की रेंज है उसके भी बहुत आगे पहुंच जाएंगे। वेरी इंटरेस्टिंग। दिस इज द तो मतलब ये बी टीम बीजेपी की नहीं, ये तो फिर बीजेपी वाले को कहना चाहिए उल्टा। मैडम, अब ये एनालॉजी होती है, वो तो चुनाव के समय होती है, जब हकीकत में वोट पड़ते हैं तो इसीलिए तो हम एग्जिट पोल करते हैं ना, कि जिसको जो वोट मिल रहे हैं वो क्यों और कहां से और कैसे मिल रहा है। ये तीनों सवालों का जवाब होता है व्हाई, वेयर एंड हाउ। whoever is getting a winning or losing, how they are winning or losing, numbers तो आ जाएंगे, बट इलेक्शन कमीशन में तो ये नहीं बताया जाएगा ना, all these why, where and how. So Pradeep ji, then my question is, could there still be a surprise in this, or are you fairly confident based on these numbers that it is going to be an NDA government again? Because अगर छोटे से percentage difference में ऊपर नीचे हो सकता है, तो is this still an election which is wide open, or is the trend too clear? बरखा जी, देखिए, अब आपको मैं वो गणित समझाता हूँ जो एलजेपी के 6% लास्ट टाइम उन्होंने अलग चुनाव लड़के जो इस बार क्या हुआ है कि 6 एडेड टू एनडीए विद एलजेपी टू रिड्यूस फ्रॉम द एनडीए टू महागठबंधन इन द फॉर्म ऑफ VIP party of Sahani, Mukesh Sahani. So 4 you remained with. Then 3 taken away by the Prashant Kishore. That 4 he's likely to get. 3 is coming from, when I say 75%, 3 is coming from NDA. So that net effect is 1%. So that is the reason why election is turning out to be more or less same like last time. Incremental thing is this 1% plus this 10,000 rupees given on account of Mukhyamantri Mahila Rozgar Yojana. That made all the difference. And what big lead you are seeing here. Now you are coming to what can go wrong or what can turn differently. See, this is the first election in Bihar after SIR. The first time Prashant Kishore is emerging. There are the percentage, you can see the substantial 10 percentage points jump in voter turnout. जरा इस बार ये कह पाना कॉन्फिडेंस के साथ मुश्किल होगा। फर्स्ट इलेक्शन में थोड़ा सा तो समझना पड़ता है क्या होता है क्या नहीं होता। द पॉलिटिकल लैंडस्केप और डायनामिक्स सीम्स टू बी changed in that sense on the ground. The pitch थोड़ी सी बदल गई है, pitch को जरा रिवाइज करें।
जी, अंत में पूछना चाहूंगी, टर्नआउट की हमने ज्यादा बात नहीं की, करनी चाहिए। आपने महिला स्कीम की बात की, इस पे भी ऑपोजिशन ने आरोप लगाया कि ये एक किस्म की पॉलिटिकल ब्राइबरी है। नीतीश कुमार के सपोर्टर्स ने कहा कि देखिए, ये जो 10,000 की स्कीम है, दिस कैन नॉट एक्सप्लेन द ड्रामेटिक टर्नआउट, द हिस्ट्री दैट बिहार हैज मेड द हाईएस्ट वोटर टर्नआउट सिंस इंडिपेंडेंस। जब इस तरह का टर्नआउट इंक्रीज होता है प्रदीप जी, तो आपके एक्सपीरियंस में what does it indicate? हम इसको किस तरह पढ़ें when joined with the numbers you have found? नहीं, आज बरखा जी, बिल्कुल दैट यूज्ड टू बी होल्ड गुड प्री दिस टेक्नोलॉजी एरा। 95 के पहले या 2000 भी मान लीजिए, चलिए इंटरनेट जो है वो 2004 के आसपास आया। कम्युनिकेशन हैज बिकम मच इजियर दीज डेज एंड सब लोग सबसे बात करते हैं। तो पहले जमाने में ऐसा होता था, जो हम कहते थे बदलाव के लिए नंबर ऑफ वोटर, क्या ने किसी को कुछ कम्युनिकेट नहीं होता था, सबका एक सूत्री कार्यक्रम होता था जी कि जो सरकार है उसको तो बदलना है, चाहे जो मर्जी हो जाए, बदलना है। अब वो फिनोमेना नहीं रहा। अब फिनोमेना महाराष्ट्र में देखिए रिपीट हुई देवेंद्र फडणवीस की सरकार, मध्य प्रदेश में, ना बतेरे एग्जाम्पल मिल जाएंगे आपको। अब वो बात नहीं, बिल्कुल बिल्कुल कि वोटर टर्नआउट डजंट मीन, हाई वोटर टर्नआउट डजंट मीन एंटी इनकम्बेंसी, वो तो मैं बिल्कुल समझ रही हूँ, लेकिन मैं आपसे पूछ रही हूँ कि ये जो ड्रामेटिक इंक्रीज, उसको आप किस नजरिए से देखते हैं? नहीं, 6% तो देखिए वो क्लीन अप हुआ, उसके चलते है 6% पॉइंट, तो केवल 4% का इंक्रीमेंटल हुआ है, और वो भी छठ पूजा के चलते जो लोग वहां पर आए हुए हैं, दैट बीन होल्डेड एट नेटिव्स, वो एक बड़ा फर्क। अब लेकिन उसमें कितने लोग किस समुदाय के थे, किस जाति के थे, किस वर्ग के थे, एज ग्रुप के थे, दैट इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग एंड दैट्स द रीजन व्हाई से उस लिहाज से ये फर्स्ट टाइम हो रहा है। तो थोड़ा सा तो मुझे भी समझने में मुश्किल हो रही है, थोड़ी सी तो काइंड ऑफ वो बोलते हैं ना कि कन्विक्शन का लेवल जो है, ये जो इंक्रीमेंटल टर्नआउट के मायने क्या है इस बिहार के इलेक्शन में, चुनाव के बाद और उसका एनालिसिस करेंगे, एंड इट्स अ गुड लर्निंग फॉर अस। Pradeep ji, I know you have to go for another show, but before we let you go, if this is your exit poll, it finds, that it is proven accurate tomorrow in the actual results, तो ये political message क्या रहेगा इस चुनाव का? Political message एक ही रहेगा कि when you are in the power or whoever in the power, they have to do only one thing: delivery, delivery and delivery. If you try and do other things, people remember it for long. वो कहते हैं ना, अंग्रेजी में एक फिलोसफर ने कहावत कही हुई है, people will forget what you say, people will forget what you do, but people will never forget how you make them feel. So it's this delivery is आप कुछ भी बोल दीजिए ना जी, उससे क्या फर्क पड़ता है? कुछ भी उसको आपको लगता है परसेप्शन है, वो इट्स अ मार्केटिंग, इट्स अ पैकेजिंग, बट जब तक वो सब्सटेंस में दम नहीं होगा, वो आपका कहा हुआ it will not hold good. Well, I have to say that the Access My India poll हमेशा हटके ही रहता है, इस बारी भी is not different, और आपने बहुत detailed explanation भी दी है about the what approach you took, the sample size, वो सारी details public domain में है, and we thank you, very interesting and always learn a lot from you, Pradeep ji. We'll look forward to talking after the results are in. Thank you, Pradeep ji. Namaskar. Take care. Thank you. Bye, sir. It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.